What's up YouTube? My name is Rohit and I come back with another video. So in today's video we will see a program which is based on a switch case, and with the help of switch case we will make a basic calculator. Alright, so first I will open my Dev C++ in which I create a new file with the help of control, and after that I will include my header file, that is #include iostream iostream. Alright, after that what we will do, we will add here a line called using namespace standard, that is std. Alright, we will end this line with the help of semicolon. After that we will declare our return type, that is int main round brackets. After that we will add two braces. In braces what we will do, we will make a data type called char. In char we will make a variable called ch. Alright, we will end this line with the help of semicolon. After that we will take our second data type, that is int. In int what we will do, we will make some variables like a, b, comma c. We will end this line with the help of semicolon. After that what we will do, we will print a message on a screen with the help of a cout insertion operator. In quotation what we will do, we will add a message, that is enter the first number. Alright, we will end this line with the help of semicolon. After that with the help of scene what we will do, we will take the input from the user and pass to the variable called a. We will end this line with the help of a semicolon. After that we will print one more statement with the help of a cout in insertion operator. In quotation what we will do, we will print a message, enter the operator. Alright, operator. Okay, we will end this line with the help of a semicolon. Okay, what we will do after that, what we will do, we will print message on a screen, that enter the second number. Right, enter the second number, and we will pass this value to the variable b. Alright, after that what we will do, we will use our switch case. So there is a keyword called switch. Alright, switch. In switch we will pass our variable called ch. Alright, that is the operator. Okay, after that what we will do, we will add two braces. In braces we will add cases. So in case 1, if there is a plus, alright, so plus colon. So अगर साइन प्लस रहा, ऑपरेटर प्लस रहा, so what we have to do, we have to do c equals to a plus b. Okay, we will end this line with the help of semicolon. After that what we have to do, we have to print the output. We have to print our output with the help of a cout addition is जो भी हमारा सी के अंदर है. ऑलराइट, वी विल एंड दिस लाइन विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन. एज लाइक दैट, जैसे हमने एडिशन की एक केस बनाई, हम बनाएंगे माइनस के लिए, दैट इज सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ऑलराइट, ओके. सो मैंने स्विच को कॉपी किया और उसको केस को मैंने कॉपी किया और उसी को मैं पेस्ट करूँगा. ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइन चेंज करूँगा माइनस का. ऑलराइट, माइनस ए सी इक्वल्स टू a minus b and subtraction. So I will use here a shortcut, that is sub is जो भी हमारा c के अंदर है. as like that we will copy and paste this once again. Okay, so in case 3 we will add multiplication. Okay, so c equals to a into b. ओके, सो मल्टी इज जो भी हमारा सी के अंदर है, मल्टी.
ऑलराइट, एज लाइक दैट मैं एक और बार इसको पेस्ट करूँगा और हम यहाँ पे अभी यूज़ करेंगे डिवाइड। ऑलराइट, डिवाइड, नीचे में भी हम डिवाइड करेंगे। ऑलराइट, 1 सेकेंड। ओके, एंड dv इज़ जो भी हमारा c के अंदर है। ऑलराइट, सो dv इज़ जो भी हमारा c के अंदर है। ऑलराइट, आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड वन डिफ़ॉल्ट। ऑलराइट, डिफ़ॉल्ट, ओके, डिफ़ॉल्ट कॉलन सी आउट इन करेक्ट ऑप्शन। इफ़ अगर हमारा यूज़र माइनस प्लस सब्सट्रैक्शन या डिवीज़न को छोड़ के अगर कोई ऑपरेटर डालता है तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे ऑन स्क्रीन, दैट इज़ इनकरेक्ट ऑप्शन, ट्राई अगेन। ऑलराइट, ट्राई अगेन। Okay, we will end this line with the help of a semicolon. Okay, so our program is ready to run now. We have to return some value, so we will return 0. Okay, so now our program is ready to run. We will end this line with the help of semicolon. Let's save the program with the help of function f11. Okay, so I will give the name to the file called switch or a case as sc. Alright, switch case, this is the shortcut. So you can see the message on a screen, enter the first number, so I entered 10. Okay, enter operation and second number. 1 second, there is a mistake, let's find out. Okay, so हमने फर्स्ट नंबर एंटर किया। ओके, सो हमने यहाँ पे सी इन नहीं करा है, सो हम यहाँ पे कराएंगे सी इन जो पास होगा हमारे वेरिएबल ch में। ऑलराइट, now our program is ready. Let's run the code. Okay, enter first number, I entered 10. Enter operator, so I have to do addition, so I will add your addition. Enter second number, I will add 20 and hit enter. So you can see, okay, so सारा एक साथ ही प्रिंट हो गया है। एडिशन इज 30। ओके, सो हमें हर स्विच में सी आउट प्रिंट करने के बाद में यहाँ पे यूज़ करना है ब्रेक सेमीकोलन। ओके, तो हमें ब्रेक को सारे इसमें ऐड करते जाना है। कंट्रोल सी। ओके, यहाँ पे हमने प्रिंट किया, उसके बाद ब्रेक, कंट्रोल वी, मल्टी ब्रेक। ऑलराइट, और यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, ब्रेक। 1 सेकेंड, ओके, यहाँ पे भी हम करेंगे ब्रेक। ओके, सो इफ़ अगर मैं प्लस डालता हूँ तो क्या होगा, हमारा एडिशन हो जाएगा, एडिशन प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। ऑलराइट, ये बाकी के स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होंगे, मीन्स रन ही नहीं होंगे। ठीक है, सो लेट्स रन द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ फंक्शन f11. So you can see the message on the screen, enter the number, so I will enter first number, I will enter 10. I have to do this time multiplication, I will enter multiply, sign of multiply. After that I will enter 10. So you can see the answer on a screen, multiplication is 100. Okay, 10 into 10 100. Let's check our default case. So I will enter the run the program one more time with the help of function f11. So I entered 10 and my operator I use is add here add rate. Okay, now I will enter the second number is 20. So you can see incorrect option, try again. Alright, because हमने यहाँ पे add rate use किया है. Okay, I hope you understand this program. Thank you for watching. If you like this video, give a big thumbs up, subscribe to the channel. Till then, peace out.